Hello and good evening, everyone. Welcome to Paytm Money Talk. And the topic for discussion today is Decoding Bandhan Multi-Asset Allocation Fund. I'm Neeraj Gogoi, your host, and I welcome all of you. So before I start, very quickly, I'd like to give you a small, brief introduction about what Paytm Money Talk is all about. Here, we basically discuss new ideas, new strategies, and what is the appropriate, probably, instrument to invest, considering the right situation, current in the current situation. So we get asset managers, fund managers, and industry experts from different AMCs, and we have a conversation. And you have an opportunity to ask your question as well. So that is how we continue our learning process. So that is a Paytm Money Talk is all about. And also, I'd like to tell you that this talk is being powered by Paytm Money. Okay, so in this episode today, I have Mr. Viraj Kulkarni, fund manager with Bandhan AMC. Now, Viraj has been associated with Bandhan since September 2015. Prior to that, he was with Franklin Templeton Asset Management, and prior to that, he was associated with Goldman Sachs India Services Limited. So he is a bachelor's degree. He had done his bachelor degree in technology, electronics, and postgraduate diploma in management, and he's a chartered financial analyst. So it's a great pleasure to have Viraj with us today. Viraj, welcome onto the stage. If you can open your camera. Thanks, Neeraj. Thanks for having me on this show. It's a pleasure to talk to you and all your viewers. Thank you so much. Wonderful. In fact, Viraj, last 3 days, things have changed, right? Till 3 days back, we were in a very, very strong uptrend. The market was every day making new high. Then come yesterday, and we saw a big fall, almost panicky. Lots of people are panicked, they think, is it a reversal of the trend, or it's a correction? Lots of questions are there in mind, you know Correct. we have been talking about Indian economy is very strong, India market is very strong. We have got so many events lined up, positive events. So how do you see the market in this context in 2024? Uh, Let me put it this way: market returns very difficult to predict. How we will go in 2024 to give you accurate answer. If I knew it, I would be making a lot more money than I am right now. But, Absolutely. I want but a very diplomatic and safe answer so that people can be really नहीं नहीं but careful. I'll just try to give you a snapshot of how we look at various factors in the market, how they are playing out right now. I'll also touch upon what has happened over the last 2 3 days, though I can't go into stock specific details. Absolutely. So in terms of market, see the way we are positioned, there are four factors which primarily drive markets: macros, liquidity, earnings, and valuation. Hmm. तो ये चार चीजें हैं primarily. This is what determines where the markets go. If we look at macros, India is in a sweet spot as of now. मतलब nothing lasts forever, but if you look at the last year and a half, mota moti, Hmm. things, all the stars have aligned very nicely for us. Oil went up, oil went down, but our current account deficit remained under control. Inflation was, there was a scare last year, but that has come off to levels which are very manageable. Globally, high interest rates is a challenge. In India, we are at levels which we always have been. If you take 10-year average, in India, 10-year government GSEC rates are at 725. आज भी we are at 720. So we are there. मतलब for us, nothing Hmm. much changed from the in terms of interest, inflation, etc. And in terms of CAD,
current account deficit, balance of payment, if you look at all those metrics, we are quite okay. So the stars have aligned very nicely for us. Our GDP Mm-hmm. growth also continues to surprise. So in terms of macro, we are fairly reasonably placed. I think the government and the policymakers have focused on stability over growth, which is helping us. As long as that focus remains, the growth may not be very high, but you will not see a sharp crisis on the macro front as long as that focus remains. Another that IT services exports or in general tech services exports has now crossed our net oil imports, so which is a big landmark or a milestone to that extent. So that structurally changes the CAT dynamic to an extent. So we are Mm-hmm. okay. Globally, obviously, there are challenges. The US, in my opinion, is not out of the woods, and some risk emanating from some global event cannot be ruled out. No, as of now, we are okay. India is okay. Globally, there are challenges. If we look at the liquidity front, domestic mutual fund inflows continue to be very robust. The SIP book is around 16,000 crores a month. That is 2 lakh crores a year, which is $25 million. Plus the EPFO inflows into ETFs of $5 to $8 billion. So that's a lot of money which is coming into the equity markets in an automated fashion because the SIP book or the EPFO flows are automated. There is no decision to be made regarding that money to that extent. So that Absolutely. provides a good buffer. FII flows have been quite decent. Given the strong macro, India has been an attractive destination for FII. So those tick marks are also there. Earnings growth has been very robust. So I think the earnings picture has Mm-hmm. really changed from what it was a decade ago or in the 2010s. So in the 2010s, during the decade from 2012 to 20 especially, every year we used to start the year saying that this year we'll have 20% growth. That is what the consensus estimate would be. And by the time we got through the year, that 20 used to get to cut to 15, 10, and finally used to end up with a 5% growth sort of a number. So that entire decade, we saw 5% earnings CAGR. From FY20, this has dramatically changed. Last 3 years, we are seeing 20% plus earnings CAGR. Even for the next 2 years, we are forecasting at least double-digit earnings growth, 14, Mm-hmm. 15, 16. So that may be debatable, but double-digit pay, there are not many question marks to that extent. So, and in terms of upgrades or upgrade to downgrade ratio, we aren't seeing significant upgrades the way we saw in the past. Earnings Mm-hmm. have largely been maintained to an extent. So, Mm-hmm. in terms of earnings, also we are okay. The only caveat is there is the earnings may slow down. मतलब last 3 years was 20% plus. Next 2 years 20% plus seems to be difficult. उतना नहीं आएगा, but healthy mid-teen sort of earnings growth तो आना चाहिए. अभी बचता है the only question that remains is Valuation. valuation. Valuations are expensive, and they Mm-hmm. are expensive because all the above three factors are in the right direction. So if all three factors are in the wrong direction, we would have been very cheap. If one Correct. or two of them would have been negative, would have been fairly valued. But because all three are in the green, valuations are where they are. Will they be here forever? The answer is no, because in each of the three factors, something or the other will change because that is how markets are. Like, things go up, things go down. One key factor which could be a determinant this year is last couple of years, the earnings growth in India has been the highest among emerging markets, and by a Mm-hmm. big margin. But as emerging Mm-hmm. markets now start to recover from their lows, there is a probability that some emerging markets may have higher earnings growth. Valuations across all other emerging markets are much cheaper than what we have in India. So that could result in some flows being redirected from India to other. So those sort of things could happen. So that high valuation, I think, is the only concern because when FIIs or asset allocators or any investors look at it, they say कि इतना भी मैं इंडिया को देने के बदले या यहाँ पे डालने के बदले I can put it in some other market, some other asset class where earnings growth is more attractive, valuations are cheaper. So fundamentally, we are okay. Valuations is the only concern to an extent. So that is the bit on the market. So if we just take a 3 to 5 year outlook, if earnings continues to be double digit growth, which it looks like कि 13 to 15 जितना nominal GDP growth आता है
उससे 2-3% अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए. दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच ड्राइव्स दिस कॉन्फिडेंस. देयर इज एब्सोल्युटली नो डेट इन द सिस्टम. Corporates have Mm-hmm. deleveraged. मतलब हम लोग एक नंबर ट्रैक करते थे, BSE 200 debt EBITDA is one number that we track. If you go back to 17-18, that number used to be कि मतलब 50 to 60 companies had debt EBITDA of more than 3, and some were quite leveraged as we remember. आज के तारीख में that number is around 15. Companies with debt EBITDA more than 3 is 15, and it is the Mm-hmm. highest in the last 20 years. Corporate gross NPS for banks are at the lowest levels in the last 20 years. So you have a good buffer in terms of very low leverage in the system. Secondly, if you look at the ROE for the Nifty, it has crossed 15%. So the quality of Mm-hmm. earnings has also improved. If you look at the absolute profitability, BSE 200 used to make 4 lakh crore of profit in 2019. Today that number is 11 lakh crore. So utna delta hai, that is the amount of extra profit that companies are making, which they can invest in Mm-hmm. capex, repayment of debt, M&A, etc., etc. So अगर ये सारी चीजें देखेंगे तो over a 5 year period reasonably gives you confidence कि nominal GDP growth से ज़्यादा earning growth आना चाहिए, and that should help markets generate returns. But in equity, as we know, this movement is never linear. There are ups and downs. Like we have seen in the last 2 days, it's a very small correction. But the 2-3% correction, I don't think is a big number. मतलब you should be ready. There can be 10-20% corrections in a short period of 3 to 6 months. That is the nature of the markets. Uh, Now, answering your specific question, see, if we go back 6 to 7 months, there were a lot of concerns. US में inflation का trajectory we weren't sure Mm-hmm. of. When would the Fed cut rates? We weren't sure of. Firstly, the when would the Fed stop raising rates was a big question. Cut तो बहुत दूर की बात है. There was war between Russia and Ukraine. Then a war broke out between Israel and the Middle East, which only seems to be spreading. In India, there were question marks about the election outcome. There were question marks about growth. Over the last 6 months, every data point has turned positive. कि यूएस में इन्फ्लेशन कम हो रहा है. फेड हैज सेड Mm-hmm. कि we are closer to cutting rates. इंडिया में इलेक्शन रिजल्ट सीम टू बी अ foregone conclusion. इंडिया में इन्फ्लेशन हैज कम ऑफ और 10 year yields are positive. So अभी क्या हो गया ना कि by the time we start this year there are not many risks which are visible in the market. If you ask people risk क्या है तो there are hardly any that you can recount to an extent. So I think उससे ना थोड़ा complacency आ जाता है market में. So some of these stocks which are seeing significant corrections, maybe they were the expectations in those stocks were slightly stretched, Mm-hmm. and that is over owned. The F&O activity in the market is very high. So if there are over-owned stocks in the market and there is even a small disappointment, it can result in a severe reaction because their F&O positions get unwound, leverage positions get sold. I think that is the nature of reaction that we are seeing. If you see, a lot of these companies are fundamentally decent companies which are not going to go under or go bust. दे शुड ग्रो एटलीस्ट जितना इंडिया का जीडीपी या नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ है उससे ज्यादा ग्रोथ तो all these companies should report, especially the jitters that we are seeing in the last 2-3 days. This is a recalibration. In some cases, valuations are stretched. In some cases, expectations are too high, and in some cases, it's just over ownership. That is leverage. There are a lot of leverage positions or FNO positions in the system. I think this is just because of Fantastic. these short-term factors to that extent. So I think that's how I would sum it up. वंडरफुल. यू हैव अपने पूरा 360 डिग्री एक काइंड ऑफ व्यू दिए हैं मार्केट में. वेरी लवली. अगेन देखिए अभी थोड़ा वैल्यूएशन में कंसर्न है मार्केट में. स्ट्रेस्ड है थोड़ा. मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ जो लास्ट 6-7 मंथ्स पीपल वर रियली एंजॉयिंग द बुल रन. प्रोबेबली Correct. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट में, एसेट एलोकेशन. Correct. कि हम जितने भी बुल रन होते हैं मार्केट में, जितने ही बुलिश होते हैं इमोशनली सेंटिमेंटली, जितने ही अच्छा लगते हैं, बट फिर भी हम लोग का एसेट को प्रॉपरली एलोकेट करना बहुत जरूरी है.
Correct. And probably this is the right time. The fall of yesterday probably have said that, if you have not done if your asset allocation has become imbalanced, probably it is the right time to balance it. Correct. So Perfect. what do you think about that? And second thing, how can we balance, maintain that asset allocation Correct. balance in Take. our portfolio? Fair. I think that's a good question, especially because of this yesterday's last 2 days. I think this needs to be addressed at this point in time. See, asset allocation जो है ना, over a long term wealth creation, ये एक studies है which we have also cited in our presentation. If you look Mhm. at long term studies, 90% of returns are determined by what your asset allocation is, Absolutely. 5% by security selection, and 5% by timing. ऐसा क्यों होता है? See, anecdotally what I feel is, अगर आप if you are investing in equity, if you Mm. get your timing or security selection right, but if you invest only 5 to 10% of your wealth in equity, over the long run, getting the right stock but only investing 10% in equity अच्छा, will विराज, be. सॉरी टू इंटरप्ट। Yeah, एक्चुअली sure. काफी थोड़ा एक रिक्वेस्ट आए हैं कि हम लोग हाँ, हिंदी में भी बात करें। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। माय बैड, या सॉरी सर, थैंक्स हाँ फॉर जी। रिमाइंडिंग। तो अगर हम लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 90% रिटर्न जो है वो एसेट एलोकेशन डिटरमाइन करता है, और हम्म 5% टाइमिंग और सिक्योरिटी सिलेक्शन। ऐसा क्यों? मतलब जस्ट एनेक्डोटली अगर हम सोचें, तो अगर हम सही स्टॉक में डालें या सही टाइम पे डालें, लेकिन सिर्फ अपने वेल्थ का 10% भी पुट इनटू द मार्केट और इन एनी एसेट हम्म which does well, versus us putting 40-50% of our wealth into that asset which does well over a longer period of time, even if in the second case the outcomes would be far better. मतलब अगर आपने 50% ऑफ आर वेल्थ इक्विटी में डाला वर्सेस 5% ऑफ आर वेल्थ एकदम सही स्टॉक में डाला, वो हम्म 50% वाला पोर्टफोलियो विल डू बेटर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Similarly, when there are excesses की मार्केट में, जैसे आज के टाइम पे there is a euphoria in certain segments कि मिड एंड स्मॉल कैप, जैसे there is a view कि थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन महंगा हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, फ्रॉथ है, ऐसे टाइम पे इफ यू गो 100% इनटू इक्विटी, अगर आप 100% इक्विटी में डालोगे और यहाँ से अगर करेक्शन आता है, यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। तो एक मेरा फेवरेट एग्जांपल है इसके लिए कि 2007 के पीक में अगर आपने स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट किया रहता एक लमसम, और आज तक उसको होल्ड किया रहता डिस्पाइट दिस बुल मार्केट, वो कैगर रिटर्न कुछ 5 या 6% का ही बनता है। So हम्म there is a risk that you can get the asset class wrong if you don't follow proper asset allocation. So I think that is why ये सही asset allocation follow करना बड़ा important है। एक asset allocation formula अगर आपके पास है तो it gives you a guiding principle, कि आपको एक गाइड दे देता है कि चलो इतना तो होना चाहिए। फिर मैं थोड़ा उसमें मेरा टाइमिंग सिक्योरिटी सिलेक्शन कर सकता हूँ कि अभी मैं उससे 5% ऊपर 5% नीचे, दैट्स अ हम्म डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने का है, बैलेंस पोर्टफोलियो और डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, की ऐसे नहीं कि आपका सारा ऐसा पैसा एक ही एसेट क्लास में है, डिफरेंट हम्म एसेट क्लास, इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, थोड़ा फॉरेन इक्विटी, ऐसे इसमें स्प्रेड करें, क्योंकि हमको नहीं पता अगले 5 साल में कौन सा एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगा। हमें लगता है कि मे बी दिस विल बी द बेस्ट, बट कोई 100% गारंटी से नहीं बोल सकता। मतलब इन्वेस्टिंग में एक है कि कोई चीज़ की गारंटी नहीं। हम्म तो उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, आई थिंक ये तीन की चीजें हैं जिस विच इज योर एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क। आई थिंक उसके लिए एसेट एलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन में दो तरीके हैं, मतलब हमारा भी फंड भी है तो विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट अगर आप दो तरीकों से आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, एक है डायनामिक, एक है स्टैटिक। हम्म तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है अगर आप देखोगे तो, कि डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या करता है, कोई मॉडल या फॉर्मूला यूज करता है डिटरमाइन करने के लिए कि कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में आपका जाना चाहिए, कि इक्विटी में, डेट में, हम्म गोल्ड में, रियल एस्टेट में, एक्सेट्रा। और एक स्टैटिक एलोकेशन है जो आपको बोलते हैं, विच गिव्स यू अ सोल्यूशन कि मेरा 100 रुपया है एंड दिस इज हाउ इट विल गेट डिवाइडेड, कि हम्म 40%, 60% इक्विटी, इतना गोल्ड, इतना डेट, इतना रियल एस्टेट, इतना फिक्स्ड इनकम।
और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है कि जो डायनामिक एसेट एलोकेशन है उसमें अगर अपना साइकिल सही गया तो रिटर्न ज्यादा बन सकता है, लेकिन अगर साइकिल हम्म गलत गया कि आपने इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट किया डायनामिकली हम्म एंड उसके बाद मार्केट्स करेक्ट होते हैं, या आपने इक्विटी में कम इन्वेस्ट किया और उसके बाद मार्केट्स गिव यू शार्प अप मूव, तो वो मॉडल गलत जाने का भी रिस्क रहता है। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, ऐसा नहीं है कि ये सही है और ये गलत है। हम्म इन्वेस्टर ने देखना चाहिए कि व्हाट ही लाइक्स, कि उसको क्या चीज हजम होती है। अगर कोई इन्वेस्टर है हु लाइक्स पीस ऑफ माइंड कि मेरा 100 रुपया है, मैंने ये 2-3 फंड में डाला और मेरे को गारंटी है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम 50 इक्विटी, इतना डेट, इतना गोल्ड, इतना फिक्स्ड इनकम, ऐसा सब में इन्वेस्ट होगा, तो ही शुड पुट इन स्टैटिक एसेट एलोकेशन। वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, इट्स एसेट एलोकेशन सोल्यूशन, या एक हम्म सोल्यूशन आपको मिल गया कि मेरा पैसा ऐसे इन्वेस्टेड हो गया। दूसरा, हम्म अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं, वो मेरे को थोड़ा डायनेमिक चाहिए कि ऊपर मार्केट गया तो इक्विटी काटो, नीचे गया ले लो, गोल्ड ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन सच अ पर्सन कैन चूज डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो सही गलत कुछ नहीं है, बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। इट्स जस्ट दैट कौन से इन्वेस्टर को क्या चीज से पीसफुल रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, ये वाला है कि बैलेंस्ड। जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन है उसमें कभी 90% इक्विटी भी हो सकता है, 30% इक्विटी भी हो सकता है, सो यू शुड बी एबल टू लिव विद दैट। अगर आपको वो चलेगा तो दैट इज गुड फॉर यू, अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए देन एक स्टैटिक एसेट एलोकेशन इज गुड फॉर यू। सो दैट इज हाउ आई Wonderful. कंक्लूड। Wonderful. So asset allocation, multi asset allocation fund का बीच में भी variability है in terms of करेक्ट, it's a fixed or डायनेमिक, static or variable. So करेक्ट, now you have your Bandhan is coming up, is having an NFO on multi asset करेक्ट, allocation fund. I was going through your all the studies and research that you have done, and there are very compelling and convincing, very studies that you have made. Would you like to show it to our viewers Yeah. today? Sure. Yeah. So we have a fairly big PPT, but मैं क्या करूँगा ना, in the interest of time, I'll highlight the four Yes. five key slides. If you have interest, you can obviously go through the entire PPT, or you can ask me questions in the Q&A session. So just बिल्कुल. I'll एंड go. ऑल्सो हम लोग का जितने भी व्यूअर्स हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपका क्वेश्चन है, इफ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन, कॉन्सेप्चुअली कोई क्लियर नहीं है, प्लीज फील फ्री, गो अहेड, टाइप योर क्वेश्चन इन योर चैट बॉक्स. यस. If we just move ahead, uh, और आगे, और आगे, और आगे एक टेबल है। हाँ, बस ये नहीं नहीं वही ये नहीं, पीछे पीछे, और पीछे प्लीज। हाँ, बस। तो ये 4 एसेट क्लासेस है। आई थिंक ये अगर आपको समझ आए ना, तो दैट विल टेल यू व्हाई एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये दिस इज नोन, ऐसे नहीं कि इसमें हमने कोई नया रॉकेट साइंस ढूंढ के निकाला है, बट ये जस्ट डेटा आपको दिखा देता है ताकि इट्स यू गेट कन्विंस्ड बाय डेटा। तो ये 4 हमने एसेट क्लासेस लिए, इंटरनेशनल इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड और डोमेस्टिक इक्विटी, और चारों के एनुअल रिटर्न निकाले 2011 से 2023 तक। तो अगर आप देखेंगे, और वो कलर कोडेड है, तो इवन इफ यू डोंट गो इनटू द ईच नंबर, इट्स ओके, जस्ट लुक, इफ यू लुक एट द कलर कोडिंग, यू विल रियलाइज कि जो टॉप रो है वो आपको देता है बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, बॉटम रो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग है। तो अगर हम देखेंगे ना, तो टॉप रो में कोई भी कलर 2 साल रिपीट नहीं हुआ है। तो ये साल का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास कभी भी नेक्स्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास हिस्टोरिकली नहीं रहा है पिछले 13, 14, 15 साल। तो some year gold does well, next year equity does well, next year international equity does well, next year debt does well. तो this ये जो है एसेट क्लासेस कीप रोटेटिंग, कि किसी साल ये एक अच्छा करता है तो नेक्स्ट ईयर दूसरा अच्छा करता है। तो इफ योर 100% इज इन्वेस्टेड इन ओनली वन एसेट क्लास, देन यू कांट आउट परफॉर्म ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। आपका सस्टेन आउट परफॉर्मेंस आना मुश्किल है। और दूसरा एडवांटेज है ऑफ दिस ये डाइवर्सिफिकेशन करने का, कि जैसे हम 2011 का एग्जांपल ले लें, या 2008 में भी अगर आप डेटा देखेंगे, तो इट इज मोर स्टार्कर कि वो साल डोमेस्टिक इक्विटी वाज डाउन 24%, लेकिन समथिंग लाइक गोल्ड वाज अप 32%। तो नॉट एसेट क्लास के रिटर्न अलग नहीं होते, उनका डायरेक्शन भी बहुत ड्रामेटिकली डिफरेंट होता है। कि मतलब इफ यू आर 100% इन डोमेस्टिक इक्विटी 2011 में, you would have lost 25% of your net worth.
बट अगर आपका थोड़ा डोमेस्टिक इक्विटी, थोड़ा फिक्स्ड इनकम, थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी, थोड़ा गोल्ड में होता, तो ऑब्वियसली योर फंड वुड हैव बीन नेगेटिव, बट Mm-hmm. वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक आपको मिल गया रहता। सिमिलरली इन गुड ईयर्स, तो ये जो एक डायनामिक है बिटवीन एसेट क्लासेस, दैट रियली हेल्प्स जनरेट लॉन्ग टर्म अल्फा टू दैट एक्सटेंट। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, तो ये एक दूसरा स्टडी है, ये भी इंटरेस्टिंग है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स ना टिपिकली चेस परफॉर्मेंस की, जो भी एसेट क्लास या जो भी सेगमेंट मार्केट का अभी अच्छा कर रहा है उसमें Mm-hmm. ज़्यादा पैसे डालते हैं। तो ये जो रेड कॉलम्स है वो दिखाता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप को कितना आउट परफॉर्म किया है, और ये जो ब्लैक लाइन है वो दिखाता है कि स्मॉल कैप फंड में कितना नेट इनफ्लो है। सो इफ वी सी व्हेनेवर द आउट परफॉर्मेंस पीक्स फ्लोज इनटू स्मॉल कैप फंड पीक्स, मतलब इन्वेस्टर का टेंडेंसी क्या होता है कि स्मॉल कैप फंड में तब पैसा डालता है जब स्मॉल कैप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। और हमने Mm-hmm. पिछले चार्ट में देखा है कि कोई भी एसेट क्लास दो कंसेक्यूटिव ईयर्स अच्छा नहीं करता। तो if you put your money into any asset when it is doing well, for in this example small caps, next year your returns are not going to be great। तो ये और इसका अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। अगर हम ये स्टडी किया है, आई नॉट मतलब आई नॉट गो थ्रू द कॉम्प्लिकेशन, पर अगर मैं इसका समरी दे दूं, अगर आप इक्वल वेटेड ये चार एसेट क्लासेस में डालें, गोल्ड, इक्विटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, Mm-hmm. तो आपका ओवर लॉन्ग पीरियड 9% का रिटर्न बनेगा, 8.7। और Mm-hmm. अगर आप लास्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास में पैसा डालें तो यू विल मेक 7.3। सो चेसिंग परफॉर्मेंस इट्स योर रिटर्न्स। तो यू शुड तो यू दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि परफॉर्मेंस चेस नहीं करना चाहिए। स्मार्ट Mm-hmm. इन्वेस्टर्स शुडंट चेस परफॉर्मेंस टू दैट एक्सटेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड Mm-hmm. प्लीज। हाँ, तो आई थिंक ये की टेक अवे है, इसके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन हेल्प्स कि पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय एसेट एलोकेशन एंड नॉट बाय मार्केट टाइमिंग और सिक्योरिटी सिलेक्शन। Mm-hmm. डिसिप्लिन्ड अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक एसेट क्लास कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं किया है। आई थिंक ये तीन प्रिंसिपल्स को लेके हमने वी हैव कम अप विद दिस मल्टी एसेट फंड व्हिच विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जस्ट गो और एक स्लाइड आगे जाइए। हाँ, तो आई थिंक दिस इज द फंड दैट वी हैव कम अप विद। तो हिस्टोरिकली हमने देखा कि वी जस्ट कैलकुलेटेड हिस्टोरिकल कैगर रिटर्न्स कि हर एसेट क्लास ने हिस्टोरिकली कितना रिटर्न दिया है वो देखा, एंड जो भी एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है वी हैव given higher weightage to that asset class because obviously you want to be invested more in those assets जिसमें आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न ज्यादा बनता है, एंड देन देयर आर अदर एसेट क्लासेस जिसकी वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन और डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। सो एसेंशियली वी हैव अ फंड, दिस इज अ स्टैटिक एलोकेशन। तो हमने बोला वील गो विद द स्टैटिक एलोकेशन। हमारे पास वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है विच इज अ डायनामिक एसेट एलोकेशन मॉडल। तो हमने बोला ये वाला वील गो विद द स्टैटिक मॉडल जस्ट बिकॉज वी केटर टू बोथ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। Mm-hmm. हमने बोला कि 50% इक्विटी रखेंगे बिकॉज ओवर द लॉन्ग रन इक्विटी हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट बाकी जो 50% है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, फिक्स्ड इनकम, इंटरनेशनल इक्विटी, आर्बिट्राज। तो ये बाकी सब मिलके अपने पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन देता है जहां से हमारा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। सो आई थिंक दैट इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ आवर फंड कि 50% इन इक्विटी विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, बाकी 50% इनटू डिफरेंट अदर एसेट क्लासेस जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है, और इसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है। सो आई थिंक दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस फंड। मार्केट में ऐसा कोई फंड नहीं है विच गिव्स यू फिक्स्ड एलोकेशन एंड इक्विटी टैक्सेशन। तो अगर आप ये फंड में एक साल से ज्यादा पैसा रखेंगे तो 10% टैक्स लगेगा, एक साल से Mm-hmm. कम रखेंगे तो 15% टैक्स लगेगा। दैट इज ऑब्वियसली एज ऑफ टुडे। अगर कल जाके टैक्स रूल चेंज हो जाए तो देन दिस चेंजेस। अनलाइक मार्केट में थोड़े फंड्स हैं जो डेट टैक्सेशन होता है, तो वहाँ पे 3 साल मिनिमम इन्वेस्टेड रहना जरूरी है इवन फॉर इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो आई थिंक ये थोड़ा यूनिक फीचर है फॉर द फंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ, तो इक्विटी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बाकी सब जो है, वेलकम टू इट, बट दोज आर लार्जली पैसिव एक्सेप्ट फिक्स्ड इनकम। इक्विटी है, ये एक्टिवली मैनेज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, जिससे मैक्सिमम अल्फा विल ट्राई टू जनरेट। एंड अगेन यहाँ पे द थॉट इज कि वन फंड के थ्रू इन्वेस्टर Hmm. गेट्स exposure to all asset classes in large, mid, small, equity, gold, fixed income, international equity, सारे asset classes through one fund. So that is why instead of going for a large cap allocation, we have said कि we'll do large, mid, small. तो जैसे मार्केट में मल्टी कैप फंड्स होते हैं which have at least 25 mid, 25 small and remaining equity, Hmm. हम सेम अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, 25 स्मॉल, 25 मिड, 25 नहीं, बचा हुआ लार्ज Hmm. कैप, इफेक्टिवली Hmm. 30 to 50 लार्ज कैप होगा। एंड द थॉट Hmm. प्रोसेस will be कि diversity across sectors, discipline and Hmm. dependability. The focus will be on जनरेटिंग अल्फा थ्रू स्टॉक सिलेक्शन। बहुत Hmm. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बहुत रिस्क नहीं लेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, गुड क्वालिटी गुड बैलेंस शीट वाले स्टॉक्स विल फोकस ऑन। सो दैट Hmm. इज द इक्विटी कंस्ट्रक्ट। अगर हम क्विकली आगे चले जाए तो आई जस्ट एक्सप्लेन द अदर एसेट क्लासेस आल्सो। डेट बंधन मतलब पहले हम आईडीएफसी थे। वी आर ऑलवेज नोन फॉर बीइंग अ हाई क्वालिटी फोकस्ड फंड हाउस ऑन द डेट साइड। तो इन्वेस्टमेंट विल बी इन जी सेक्स ट्रिपल ए। एंड फॉर अल्फा जनरेशन हम ड्यूरेशन में खेलेंगे, कि मतलब अगर लगता है इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो Hmm. वी डू द ड्यूरेशन मैनेजमेंट, बट क्रेडिट रिस्क इसमें नहीं लेंगे कि वील इन्वेस्ट इन पेपर्स जहाँ पे कोई क्रेडिट लॉस कभी होने के चांसेस आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो टू दैट एक्सटेंट। If we go ahead, please. International equity, तो अगर इंटरनेशनल इक्विटी के लिए we have come up with an interesting concept कि rather Hmm. than कि हम सिर्फ यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, यूरोप में इन्वेस्ट करेंगे, वी Hmm. विल इन्वेस्ट इन एक एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स आता है। दैट Hmm. इंडेक्स इन्वेस्ट इन ऑल कंट्रीज ग्लोबली, मतलब इन्वेस्टेबल जो कंट्रीज है। तो उसके थ्रू आपको 60% यूएस, Hmm. 20% मार्केट्स एक्स यूएस एंड 20% इमर्जिंग मार्केट्स। तो एक फंड Hmm. के थ्रू यू गेट एक्सपोजर टू ऑल मार्केट्स इन द वर्ल्ड। देन यू डोंट हैव टू वरी कि अगर ब्राजील अच्छा करता है, जापान अच्छा करता है, यू गेट Hmm. एक्सपोजर टू एवरी मार्केट थ्रू दिस फंड। ऐसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया टू दैट एक्सटेंट। एंड ये पैसिवली मैनेज रहेगा, इट्स एन ईटीएफ, तो वी आर नॉट टेकिंग Hmm. एक्टिव, वी डोंट हैव expertise internally to manage international assets. Hmm. Gold and silver, which is again 10%, the 5% gold, 5% silver, that will be a static allocation. Hmm. Next slide. Next slide. Next slide. So next slide, I'll just show you the returns. नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो हमने क्या किया है ना कि ये एक्चुअल फंड का रिटर्न नहीं है, ये फंड तो अभी लाइव नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर हम ये एसेट एलोकेशन ले लें कि 50 इक्विटी, Hmm. 10 गोल्ड सिल्वर, 15 इंटरनेशनल इक्विटी एंड बाकी फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज, जो भी हमारा एसेट एलोकेशन है वो ले। एंड इफ यू Hmm. बैक टेस्ट यूजिंग निफ्टी, मतलब पैसिव, क्योंकि कोई एक्टिव फंड है नहीं, Hmm. तो हमने निफ्टी ले लिया टू बैक टेस्ट। तो ये रिटर्न्स आते हैं। तो ये जो येलो हाइलाइटेड है देखेंगे आप, 3 ईयर बेसिस पे। आई फोकस ऑन 3 ईयर बिकॉज वी सजेस्ट कि ये फंड यू इन्वेस्ट इन विद मिनिमम 2 to 3 horizon। बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए दिस मे नॉट बी द आइडियल प्रोडक्ट एज सच। तो अगर आप 3 साल रिटर्न देखें तो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 12.9% कैगर दिया है। ये Hmm. स्ट्रेटेजी मैनेज इन अ पैसिव मैनर वुड गिव यू 11.6% कैगर। होप है कि सिंस विल मैनेज इट एक्टिवली, तो 2-3% अल्फा इस पर हम ऐड करेंगे। 1-2% तो करेंगे, इवन इफ यू से कि इक्विटी Hmm. 50% ही है। सो नेट नेट द एजेंडा इज कि हम आपको निफ्टी या निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देंगे, बट अगर आप विद इक्विटी टैक्सेशन। बट अगर आप यहाँ पे Hmm. वोलेटिलिटी या डाउनसाइड देखो तो वो निफ्टी से आधा है, कि 1 ईयर Hmm. बेसिस पे निफ्टी वुड हैव सीन मैक्सिमम 32% डाउनसाइड, ये फंड में मैक्सिमम 16% डाउनसाइड दिखेगा। इवन ऑन अ 3 ईयर बेसिस निफ्टी -4% कैगर है, मतलब 15% डाउन है निफ्टी 3 ईयर बेसिस पे। दिस फंड हैज नेवर गिवन, दिस स्ट्रेटजी हैज नेवर गिवन नेगेटिव रिटर्न्स ऑन अ 3 ईयर बेसिस। एंड सिमिलरली 5 ईयर में भी आप वही देखोगे। सो ये फंड का होल प्रिंसिपल इज वन फंड एक्सपोजर टू 5 डिफरेंट एसेट क्लासेस, जिसमें लार्ज मिड स्मॉल होता है। इंटरनेशनल इक्विटी में यूएस डेवलप मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर फिक्स्ड इनकम, एक Hmm. फंड के थ्रू विद इक्विटी टैक्सेशन। रिटर्न प्रोफाइल विल बी एटलीस्ट निफ्टी और हायर, with
half the drawdown of Nifty. That is the way we have constructed this fund. And ये market में we are recommending this fund or pushing this fund because we believe हम्म, कि फंडामेंटल्स आर गुड. तो हमको इक्विटी, डोमेस्टिक मार्केट इक्विटी से बिल्कुल बाहर नहीं बैठना है. वी डोंट वांट टू टेक दैट कॉल कि नहीं हम तो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अगले 5 साल अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहा, फंडामेंटल अच्छे रहे, तो यू विल मिस आउट ऑन दैट. तो दैट 50% यू गेट एक्सपोजर टू लार्ज मिड स्मॉल इंडियन इक्विटी. हम्म, लेकिन हमने देखा है कि ट्रीज ऑलवेज डोंट ग्रो टू द स्काई. हमेशा चीजें पॉजिटिव नहीं रहती है. देयर आर ऑलवेज करेक्शंस. लास्ट 2 दिन में हमने छोटा करेक्शन देखा है, बट आई विल नॉट रूल आउट कि 10-15% का करेक्शन निफ्टी में आ जाए ओवर द नेक्स्ट ईयर और ईयर एंड हाफ. तो उस टाइम पे दिस फंड विल प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड. तो इसके लिए हम बोल रहे हैं आज के तारीख में जब वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, थोड़ा फ्रॉथ है स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में, अगर आपको लमसम डालने का है तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट वेयर यू गेट हम्म, पार्टिसिपेशन इन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स with limited downside. So I think that's how we will position this fund to that extent. wow. I think Viraj, you have given a complete end-to-end, Thank you. description, end-to-end, all the points covered. तो व्यूअर्स का भी कोई भी क्वेश्चंस आपका है, प्लीज फील फ्री. आपने कहीं पॉइंट मिस कर दिए हैं तो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ऐसे भी दो एक क्वेश्चन है. एक संतोष, उनका क्वेश्चन है कि बेस्ट वन इज मल्टी कैप वर्सेस मल्टी एसेट. तो उन्होंने मल्टी कैप हम्म. मल्टी एसेट का बीच में शायद यू नीड टू. डिफरेंस ठीक है. तो मल्टी कैप जो कैटेगरी है, दैट उसमें ना हम सिर्फ इंडियन 100% इज इन्वेस्टेड इन इंडियन इक्विटी, जिसमें 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और बचा हुआ लार्ज कैप में हम डालते हैं. लेकिन उसमें यू गेट एक्सपोजर टू 100% एक्सपोजर टू इंडियन इक्विटी. तो वो हो गया मल्टी कैप. और मल्टी एसेट में यू गेट एक्सपोजर टू डिफरेंट एसेट्स. और वो कोई ऐसे डिटरमाइंड नहीं है कि आपको यही एसेट में मिलेगा. एवरी फंड हाउस इज लॉन्चिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. हमने जो चूज किया है, हमने बोला है कि 50% इक्विटी रहेगा, बाकी सारा गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एक्सेट्रा रहेगा. और जो 50% इक्विटी रहेगा दैट विल बी मैनेज्ड इन मल्टी कैप में. तो ये बिल्कुल मतलब ये थोड़े दो अलग फंड हो गए. मल्टी कैप में इट्स ओनली 100% इंडियन इक्विटी. मल्टी एसेट, एटलीस्ट हमारा जो मल्टी एसेट है उसमें 50% इज इंडियन इक्विटी, 50% इज एवरीथिंग एल्स. तो इसके लिए मल्टी कैप है तो सिर्फ वो कैप से आपको पता चला कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो मल्टी कैप हो गया. और मल्टी एसेट में या मल्टी एसेट तो मतलब इक्विटी इज वन एसेट, गोल्ड इज वन एसेट, डेट इज वन एसेट. सो आई थिंक ऐसे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फंड्स टू दैट एक्सटेंट. There's a word of appreciation from Ram Naresh Yadav. Sir, I have Bandhan IDFC Sterling Value Fund from March 2019 lump sum, time to time. Now overall given a return of 169%. What is your reaction to this? नहीं मतलब वो तो मैं खुद की तारीफ तो नहीं करूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. थैंक्स फॉर नोटिसिंग एंड थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग अस. इट्स डन वेरी वेल फॉर अस एंड आई थिंक वहाँ पे हमने काफी अच्छा स्ट्रेटेजी, थॉट प्रोसेस लगा के वैल्यू स्टाइल में वो फंड को चलाया है. एंड आई होप दैट द परफॉर्मेंस कंटिन्यूज टू दैट एक्सटेंट. जस्ट बी केयरफुल. पिछले 4 साल में जितना रिटर्न बना है फॉर द मार्केट, नॉट जस्ट दिस फंड, अगले 2-3 साल में उतना एक्सटेंट ऑफ रिटर्न आना मुश्किल है. क्योंकि मार्च 2019 में जब आपने इन्वेस्ट किया, आपका टाइमिंग एकदम सही था. यू इन्वेस्टेड व्हेन मार्केट्स वर रिलेटिवली चीप. उसके बाद अर्निंग्स ग्रोथ भी आया एंड वैल्यूएशन भी रीरेट हुआ. अभी वैल्यूएशन ऑलरेडी महंगा है, तो भले ही अर्निंग ग्रोथ आएगा, यू such kind of returns are hard to replicate for the next 4 years. So I'll just add that word of caution. This is for the market. Fund will always endure कि we beat the market to that extent. पिछले 4 साल में बीट किया, होपफुली अगले 4 साल में मार्केट बीट करेंगे. Acha, Viraj, gold is one of our protector. When the market becomes volatile, gold protect us. You have allocated 10% silver plus gold. Don't you think? करेक्ट. And that is fixed. That's going to remain fixed. So don't you think कि it is enough to take into account the volatility aspect? ठीक है. तो सी द वे गोल्ड प्रोटेक्ट्स अस, इट प्रोटेक्ट्स अस इन टू वेज. एक है कि गोल्ड, क्योंकि गोल्ड है ना, इट्स एन इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी, जैसे स्टील होता है, जैसे कॉपर होता है, तो वो डॉलर में होता है. तो गोल्ड में हिस्टोरिकली डॉलर रिटर्न्स आरंट ग्रेट. मतलब उतने अच्छे नहीं है गोल्ड के डॉलर रिटर्न. कुछ 4-5%, 6% क्या कर रहे हैं. व्हाट एड्स टू द चार्म ऑफ गोल्ड फॉर अस इज कि अपने को रुपी डिप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है.
कि Hmm. रुपी, इफ यू गो बैक टू 2010 या Hmm. 2008, रुपी यूज्ड टू बी 40, आज के तारीख में रुपी 80 हो गया। तो अगर गोल्ड फ्लैट भी रहता तो भी अपना गोल्ड डॉलर में फ्लैट भी रहता तो भी रुपी में गोल्ड डबल हो गया। ऑब्वियसली गोल्ड हैज गिवन यू डॉलर रिटर्न, तो रुपी रिटर्न्स आर इवन हायर। तो यू हैव अ वैलिड पॉइंट, बट इसके लिए हमने ना, वी लुक एट 25% ऑफ आवर फंड हैज डॉलर एसेट्स, विच इज Hmm. इंटरनेशनल इक्विटी प्लस गोल्ड सिल्वर, तो ये डॉलर एसेट है। तो वो हमने डॉलर एसेट को इसके लिए लिया है कि जब भी डोमेस्टिक इकोनॉमी गोज थ्रू अ टफ टाइम, मैक्रो चैलेंजेस आते हैं, तो रुपी डेप्रिसिएशन आता है। तो डॉलर Hmm. एसेट्स विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन। उसमें हमने Hmm. स्प्लिट कर दिया है कि गोल्ड भी लिया है, इंटरनेशनल इक्विटी भी लिया है टू दैट एक्सटेंट। तो वो जो Okay. गोल्ड के प्रोटेक्शन का आधा फीचर है वो अपना इंटरनेशनल इक्विटी में आपको मिल जाता है, विच इज रुपी डेप्रिसिएशन। Hmm. एंड जो बाकी है दैट इज अ बिट ऑफ डिवर्सिफिकेशन, कि गोल्ड का रिटर्न भी आ गया और इंटरनेशनल इक्विटी का रिटर्न भी आ Okay. Now, again, now, which age group, which risk profile गया। investors के लिए this, of course, asset allocation fund तो सबका होना ही चाहिए. Everybody करेक्ट, need to have that. But करेक्ट। age wise, किस प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये ज्यादा सुटेबल है? बिकॉज आपका रिस्क इज काफी कम है यहाँ पे, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज मच बेटर. तो मतलब ब्रॉडली हमने इसमें कैसे पोजीशन किया है ना, कि वी आर ट्राइंग टू से कि ये पोर्टफोलियो का एक कोर होल्डिंग है, इट हैज टू बी अ कोर हम्म. पोर्टफोलियो होल्डिंग। मे बी आप वन नहीं, यू कैन डू इट टू टू थ्री फंड्स। आप सी, आई एम फ्रॉम बंधन, तो आई से बंधन फंड इज द बेस्ट, बट एज इन्वेस्टर्स वी जनरली डोंट पुट ऑल आवर मनी इन वन फंड एज सच। बट द थॉट ये है ना कि इफ यू आर नॉट अ वेरी एक्टिव इन्वेस्टर इन द मार्केट, लेकिन आपको एसेट डिवर्सिफिकेशन चाहिए, इक्विटी पार्टिसिपेशन चाहिए, so this is हम्म. applicable to all such investors. You get that through one fund with equity taxation, because अगर आप ये खुद हम्म. से करना चाहते हैं, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी, तो ऑन द अदर एसेट क्लासेस आपको टैक्स रेट काफी ज्यादा लगता है। जैसे इंटरनेशनल इक्विटी गेट्स टैक्स्ड एज डेट, फिक्स्ड इनकम ऑब्वियसली गेट्स टैक्स्ड एज डेट, गोल्ड हैज अ डिफरेंट टैक्स रेट। थ्रू दिस फंड आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है इवन ऑन द अदर एसेट क्लासेस टू दैट एक्सटेंट। सो ये हमने डिजाइन किया है एज अ कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग। इसके लिए हमने स्टैटिक एलोकेशन रखा है कि कोई भी इन्वेस्टर कैन मेक हिज कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग। Just to nuance it a bit, it is more obviously suitable to conservative investors जो ये हम्म. मार्केट में सोच रहे हैं कि स्मॉल कैप्स माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, हमको स्मॉल कैप में पैसा नहीं डालना है, इफ यू हैव सम lump sum money to put, this is a good alternative. If someone is exiting small caps and then wondering कि मुझे मार्केट में फिर भी हम्म. पार्टिसिपेट करना है, this is a good fund to put. So it's a broad टारगेट की, मतलब काफी टाइप के लोग इसमें डाल सकते हैं कि कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है। बट इन दिस मार्केट इट इज स्पेशली फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जिनको इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, बट आर वरीड कि मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा फ्लॉट हो सकता है, मार्केट में करेक्शन आ सकता है। सो आई थिंक दैट वुड बी द टारगेट सेगमेंट। ओके. सुप्रियो दास का एक क्वेश्चन है, ईटीएफ गोल्ड एंड सिल्वर और मल्टी एसेट फंड, which one is the best option or नहीं, better अगर option? अगर सी, इफ यू डू ओनली गोल्ड या सिल्वर, आप एक ही एसेट क्लास में अपना सारा बेट कर रहे Hmm. हो। तो I will always suggest you have to bet across asset classes. So multi-asset is the is the best option over a long-term period. Unless and until किसी का view है कि gold बहुत अच्छा करना है, but again views can always go wrong. दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने 100 कॉल लिए और उसके 90 कॉल सही गए। Even if you get 60-65% of your calls correct, you are a good, great fund manager in your opinion, or a great investor, not just fund manager, investor level Mhm. thing. So any day, if you ask me, multi-asset, because diversification is important, discipline is important, staying invested for the long term is important. So that is through a multi-asset fund. Okay, wonderful. I think Viraj, we have taken into account most of the points about the fund. What is going to be your closing advice to the investors? Um, Considering everything that we have discussed, uh, as a portfolio investor, lump sum जाना चाहिए, SIP करना चाहिए. Uh, Correct. Yeah, can a young person who is just starting his career, probably, can he also take into this fund as a yeah, core portfolio? you know yeah. yeah. See, so मैं ना थोड़ा I'll just start out with my message on markets. I think India is in a good spot. Hmm. Uh, uh,
to grow for the next 5 to 7 years. और ये corroborate काफी लोगों ने ये repeat किया. I'm not the first person to say it, but I just believe in that story because मैं वो data देखता हूँ on a daily basis. So over a 5-7 year period, we should have a good capex cycle. capex जब भी investments होते हैं economy में, GDP growth आता है. Whenever there is good GDP growth, earnings growth आता है. And whenever earnings growth is decent, markets give you decent returns. So from a 3 to 5 year perspective, you can't talk about the 10, 15, 20 year perspective because वो तो क्या है कि you never know markets कब turn है, कब ये economic fundamentals change होते हैं. But over a 3 to 5 year perspective, I am very confident कि we'll have decent earnings growth. There will be hiccups, but over a 5 year period from now, earnings growth will be very decent. That will drive decent market return. So that's the broad outlook. उसमें currently markets महंगे as we have been discussing. Globally there are a lot of challenges. So there can be an event which causes a significant market correction. तो ऐसे टाइम पे when valuations are not in favor, lump sum जाना is not the best option. I Hmm. will, as an investor, I will not put lump sum in mid and small caps for sure. अगर आज से आप बैठ के आप 3 साल का मिड स्मॉल कैप में एसआईपी करो तो इट्स ओके, देयर इज नो हार्म इन इट बिकॉज Hmm. ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स एक दो करेक्शन आएंगे, आपका डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपको एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर एनएवी मिलेगा. तो यू शुड बी ओके इफ यू आर इन्वेस्टिंग ओवर अ 10 ईयर होराइजन एज अ यंग इन्वेस्टर, बिकॉज आपने यंग इन्वेस्टर की बात की. अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आई विल अवॉइड पुटिंग इट इनटू एनी मिड एंड स्मॉल कैप फंड एट दिस Hmm. वैल्यूएशन. उसके लिए यू पुट मनी इनटू अ मल्टी एसेट. मतलब वो लोग टाइमिंग कर सकते हैं कि यू कैन वेट कि मार्केट करेक्ट होगा तब डालेंगे. बट इन माई ओपिनियन टाइमिंग इज द हार्डेस्ट थिंग इन मार्केट्स. आप स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से कर सकते हैं, बट टाइम करना ये बहुत ही कम लोगों को आता है अच्छे से. वो मार्केट मूव कर जाएगा ऊपर या नीचे एंड यू विल बी कॉट लैगिंग टू दैट एक्सटेंट. तो इसके लिए माय सजेशन इज over if you have a long term view, you're ready to do SIP, mid and small Hmm. cap is okay. But अगर आज आपको lump sum डालना है, you put it, I will say कि मार्केट से पूरा एग्जिट ना करें, बट इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और एनी सच फंड जहाँ पे आपका डाउनसाइड थोड़ा प्रोटेक्टेड है. दैट विल बी माय एडवाइस. Wonderful. I think that's well said. Like in case of small cap, mid cap, or any thematic fund, timing is very important. And multi asset allocation fund, may you can save yourself for not timing the market. You can just go ahead and invest it. So I think, yeah, I think thank you so much, Viraj, for being a part of this program, and I'm sure all the viewers they have not only understood about multi-asset allocation fund, but also got a clear view about how to look ahead 2024 in the middle of this volatility. People are a little bit confused at this moment and unsure what to do. And I think today this session has given thrown lots of light into this, conceptually made them clear as to how to plan their investment. So thank you, Viraj. Thank you so much, and thanks all our viewers for this for being a part of this program. Thank you, Thank you. Neeraj, for hosting me, and thanks for this wonderful session. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you.